एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिप्रेप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं BHIC-131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू circa 300 CE का इग्नू का असाइनमेंट, जो कि बैम कोर्स दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, और ये हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है। अपना कोर्स कोड मैच कर लें, दैट इज़ BHIC-131। सो दीज आर द क्वेश्चंस. That is, these are divided into three parts: assignment 1, 2 and 3. First part में 20 marks each, second 10 marks each, third 6 marks each. So इस वीडियो में मैं आपको सारे इन क्वेश्चंस के सॉल्व्ड आंसर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ. You can take screenshots or pause the video and write down your assignments because you have to submit them before March. That is 31st of March से पहले आपको submit करने हैं. So let's continue. This is the first question. What do you understand by archaeological excavation? What is the difference between archaeological exploration and excavation? So ये first question है, ये उसका answer है. You have to write answers in small paragraphs, not very large paragraphs. You have to make margins both the sides of the A4 size sheet so that your answer look a bit presentable. जिसका भी English medium में है, they can grab this question paper and these are the answers for it. This is the latest assignment of July 2024 session which you have to submit in March 2025. तो आप आंसर को ऐसे 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो. Then this is the rest of the answer. Next question है, examine the main features of the economy, polity and society of the early Vedic period. अब जैसे कि इस क्वेश्चन में खुद 3 पॉइंट्स पूछे हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में बताना है. तो आप ऐसे ही 3 डिफरेंट सब हेडिंग्स दोगे एंड देन यू विल राइट सब पॉइंट्स बिलो इट. इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को इजी होता है चेक करने में एंड विल गेट मोर मार्क्स लाइक दिस, और आंसर बहुत ही आपका क्लियर और सब्टल दिखेगा. मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और लास्ट में डिस्क्लेमर और कंक्लूजन ज़रूर लिखें. देन द थर्ड क्वेश्चन, एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ द अर्बनाइजेशन इन 6th century BCE. दिस इज़ द आंसर, जिसमें आप राइज ऑफ महाजनपदास, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, देन कुछ की फीचर्स लिखेंगे आप इसके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्यास. मौर्यन पीरियड था हमारा, हमें इसके बारे में लिखना है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो सत्ता उस टाइम पे चलती थी, हाउ डिड दैट कोर्ट ऑफ किंग वर्क. सो सेंट्रलाइज पावर, ब्यूरोक्रेसी, लेबर का डिवीजन कैसे था, स्पाइज एंड जासूस जो होते थे और जो इन्फॉर्मर्स होते थे राजा के, वो कैसे काम करते थे. देन इकोनॉमिक मेजर्स. Writing your answers in this way, the way I am presenting it to you, will be the best way to get the marks. Next question, write a note on Satavahanas. So Satavahanas की आपको पता होगा हिस्ट्री जो करते हैं, that was a powerful dynasty जिन्होंने 200 साल तक रूल किया. Then you have to write about their significance and the disclaimer. Then 6th question. अब 6th, 7th, 8th, 9th और 10th question जो है वो 6 marks के हैं. So you can write them down for about 1 or 1.5 page. That's more than enough. Northern black polished ware culture के बारे में लिखना है इस क्वेश्चन में आपको. लाइक ये शॉर्ट नोट्स लिखने हैं काइंड ऑफ. फिर significance and then disclaimer. Then 7th question is about teachings of Buddha. इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया है. अगर आपको और लिखना है so you can search in your book or on Google and write about it more, but I guess it's sufficient. See, सबसे पहले यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में दिया है. Then here 8-fold path are also given, so this is more than enough for a 6 marks question. Then peninsular India, 8th question, जिसमें geography, geology, river, climate, culture, significance सबके बारे में बात करेंगे. Then the 9th question, Shungas and Kharavela. Then this is the last and 10th question, different kinds of chiefdoms in Tamil region. Velir, Khizars, Vidar, these are the chiefdoms of that time, at that time of Tamil region. So that's it for the video. Thank you so much for watching, and if
you want any other course code that you want me to provide you the solved assignment, then please comment below the video. I'll help you in the next video with that.